Hello, boys and girls. This is the third video we are doing of direct indirect, and in this video, we are going to do interrogative sentences. Interrogative sentences are very, very important. Interrogative sentences exam में आएंगे. Now, this video is entirely for interrogative sentences type 1. अब टाइप वन का मतलब क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस टाइप वन का मतलब ये है कि ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब मैंने तुम्हें हेल्पिंग वर्ब सिखाए हैं इन माय वर्ब्स वीडियो। अगर तुमने वर्ब्स का वीडियो नहीं देखा तो पहले जाओ वर्ब्स का वीडियो देखो और फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट ओपन करो, बिकॉज विदाउट वर्ब्स यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व और अंडरस्टैंड एनी ग्रामर टॉपिक. So, if your interrogative sentences are starting with helping verbs, अब helping verbs means मैंने तुम्हें समझाया है कि 5 friends होते हैं. Which are the 5 friends? Is, was, are, were, am. 3H, has, have, had. 3Ds, do, does, did. And 3 partners, can, could, shall, should, will, would. तो अगर तुम्हारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहे हैं बॉयज एंड गर्ल्स, देन व्हाट टू. Now the formula is very, very easy. This is the formula. These are the 7 steps that you people have to follow. So पहले आता है फर्स्ट स्पीकर. फर्स्ट स्पीकर क्या होता है? जो सेंटेंस को बोल रहा है. Then said gets converted into asked. अब मैंने तुम्हें वीडियो नंबर 2 में सिखाया है the changes we have to make in reporting verbs. So said will be converted into asked in an interrogative sentence. फिर हम हमेशा सेकेंड स्पीकर ऐड करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में. अब सेकेंड स्पीकर क्या होता है? सेकेंड स्पीकर वो होता है जो सेंटेंस को सुन रहा है. अब गुजरात बोर्ड के स्टूडेंट्स, the second speaker will be given in the question. As you people know कि तुम्हें textual paragraph आएगा और textual paragraph में you people are very well aware of the characters who are having a conversation with each other. So second speaker गुजरात बोर्ड में दिया होगा, that second speaker you have to copy. और अगर नहीं दिया है then you can add the name of the character. Okay, but for CBSE you have, if question में second speaker नहीं दिया boys and girls, then you have to add a second speaker on your own by adding pronouns. You can't add random names, you have to add pronouns. For example, he asked her, he asked him, he asked them. उसके बाद हमें दैट यूज नहीं करना है. इन टाइप 1 सेंटेंसेस वी विल यूज इफ और वेदर. दैट यूज किया, हाफ मार्क विल बी कट. इफ और वेदर के बाद बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव टू फाइंड आवर सब्जेक्ट एंड वी हैव टू ब्रिंग द सब्जेक्ट टू द फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. अब ये जो स्टेप नंबर 5 है इसमें 99% स्टूडेंट्स गलती करते हैं. क्यों? क्योंकि तुम अपना सब्जेक्ट आगे लाना भूल जाते हो और तुम्हारे मार्क्स उधर कट हो जाते हैं. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप. उसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करो, नोट डाउन करो, स्क्रीनशॉट लो. But step number 5 is very, very important. So what does step number 5 say? Step number 5 says that you have to find the subject. Subject क्या होता है? जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं. The doer of an action. तो सब्जेक्ट को ढूंढना है और सब्जेक्ट को स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस में लेके आना है. Then we have to change the present tense verbs into past tense. और अगर क्वेश्चन past tense का है तो तुम्हें उसे past participle में कन्वर्ट करना है. And then you have to change the pronouns. Pronouns मतलब अगर क्वेश्चन में I है तो तुम आंसर में I नहीं लिख सकते. I का हो जाएगा me, she का हो जाएगा her, he का हो जाएगा him, we always gets converted into they. अब तुमने we का us किया, your marks will be cut. So you have to remember, this is very very important, that we always gets converted into they. Now these are some examples, पर उससे पहले we will quickly revise the formula. First comes the first speaker. Step 2, remove the question mark, change the reporting verb from said to asked. Then you have to add a second speaker. सेकेंड स्पीकर के बाद दैट यूज नहीं होगा, दैट की जगह हम इफ और वेदर यूज करेंगे. Then we have to find the subject. We have to bring the subject to the front of the sentence.
देन प्रेजेंट टेंस का पास्ट टेंस करेंगे, पास्ट टेंस दिया है तो पास्ट पार्टिसिपल करेंगे, एंड एट द एंड वी हैव टू चेंज द प्रोनाउंस। और ये सब करने के बाद बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव टू रिमूव ऑल द पंचुएशन मार्क्स। तो आंसर में डबल इन्वर्टेड कॉमर्स नहीं आएगा, क्वेश्चन मार्क भी नहीं आएगा। गलती से क्वेश्चन मार्क लिख के आ गए, यू विल कंप्लीटली गेट 0 out of 3। Now, these are some examples of interrogative sentences type 1. For example, question number 1, she said, will you help me? So, she said का हो जाएगा asked. अब उसने किसको पूछा? Add a second speaker. As second speaker is not given, you have to add a second speaker on. So she said, "Will you help me?" का indirect speech क्या होगा? She said will be converted into asked. She asked him if or whether he would help her. अब देखो, you कभी भी indirect speech में नहीं आता। You की जगह हम हमेशा second speaker add करेंगे। तो तुमने इधर him add किया है, so she asked him if him would help her नहीं हो सकता, so if he would help her. Will का past tense होता है would, and at the end you have to remove the question mark. He said, have you paid the bill? So he asked her. Second speaker nahi diya. In this case, I have added her. So he asked her if she had paid the bill. अब तुम अगर एग्जाम में लिख के आए he asked her if had she paid the bill, you will get a 0. So you have to find the subject and you have to bring the subject to the front. He said, aren't we late? He asked them if or whether, we का हो जाएगा they, aren't का हो जाएगा weren't, late, full stop. She said, shall I help you? She asked him if or whether she should help him or if she would help him. Would is more suitable in this case. Should is used commonly for compulsion. So she asked him if she would help him. They said, can we speak the truth? They asked him if, we का हो जाएगा they, can का हो जाएगा could, speak the truth. So this is the way, boys and girls, you have to convert type 1 of interrogative sentences into indirect speech. I hope तुम्हें ये समझ आ गया है. You have to be very thorough with the formula which I have shared with you on the screen. Okay. Then this is an exercise I'm sharing with you. Now the exercise is of 10 questions. अब आराम से ये 10 questions करो, उसको notebook में solve करो. Don't be in a hurry to see the answers. Answers are given in the video itself, but you should pause this and you should solve all the 10 questions and then check कि तुम्हारी कहाँ गलती हो रही है. अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? शी सेड विल द पुलिस हेल्प द पुअर पीपल. सो शी आस्क्ड, सेड का हो जाएगा आस्क्ड. किसको पूछा? ऑलवेज ऐड अ सेकंड स्पीकर. सो शी आस्क्ड हिम, शी आस्क्ड हर, शी आस्क्ड देम. तुम्हें जो सेकंड स्पीकर ऐड करना है करो. सो शी आस्क्ड हिम इफ और वेदर. दैट नहीं आएगा, इफ और वेदर आएगा. इफ और वेदर के बाद सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? द पुलिस, क्योंकि हम पुलिस के बारे में बात कर रहे हैं. सो इफ द पुलिस. विल का पास्ट टेंस क्या होता है? वुड हेल्प द पुअर पीपल, फुल स्टॉप. अब तुम्हें इतना याद रखना है कि हेल्प का हेल्प्ड नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया है कि कभी भी इंग्लिश में हम विल वुड, कैन कुड, शैल शुड यूज करते हैं. विल वुड, कैन कुड, शैल शुड के बाद हमेशा प्रेजेंट टेंस वर्ब आता है, हम पास्ट टेंस नहीं यूज करते. तो ये गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए. डिड के बाद हम हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. टू के बाद हम हमेशा प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, he said, do you know the way to market? So he asked her if she, no का हो जाएगा knew the way to the market, full stop. You have to remove the question mark, you have to remove the punctuation mark. So I hope तुम्हें interrogative sentences समझ आए. Interrogative sentences type 1 is very very important from board point of view, from exams point of view. Teacher के favorite होते हैं interrogative sentences क्योंकि order request are very very easy. So she'll ask you interrogative, she'll ask you assertive sentences. So be very thorough. If you have any doubt, please comment in the comment section. I'll try to solve them. तुम्हें जो भी रूल या स्टेप समझ नहीं आया है वो पूछो. I'll try to solve it
If you like this video, subscribe to my channel. Thank you.